Here we are studying the principle of perpendicular axis. In previous lecture you are studying the principle of parallel axis. इसके पहले हमने principle of parallel axis देखे. अब हम पढ़ने जा रहे हैं principle of perpendicular axis. In case of principle of perpendicular axis, what is the statement of the principle of perpendicular axis, friends? So moment of inertia of laminar body. कोई भी एक laminar body ले लेते हैं जिसके अंदर दो axis, laminar body means plane body. Means moment of inertia of a laminar body about an axis perpendicular to its plane is algebraic sum of moment of inertia of that body about two mutually perpendicular axes in its plane, that is Iz equals to Ix plus Iy, that Ix and Iy be the moment of inertia of that body which lie in its plane. x एक्सिस और y एक्सिस उसी प्लेन के अंदर होंगे और z एक्सिस is perpendicular to its lamina. Means the statement is that the moment of inertia of a laminar object, इस laminar body बोल सकते हैं, the moment of inertia of laminar object about an axis perpendicular to its plane is the sum of moment of inertia of body about two mutually perpendicular axes which is lie in its plane. So this is about the statement of principle of perpendicular axis. How we prove this? Again we consider a body of any shape, that is the laminar body, and we consider a axis about which that body is so rotated with an angular velocity is so omega, and suppose that this is the axis about which it is rotated. Suppose that this is an x axis and this is y axis. ये है y axis और ये है x axis और ये है z axis. Suppose we consider a laminar body, and if that body is rotated about an axis perpendicular to any point, no case, but perpendicular to its lamina, that is z axis, and we consider this is the x axis and this is y axis. X axis and y axis lies in its plane, that is the important. Suppose to find the moment of inertia of that body about perpendicular axis, suppose we consider a body which is at a point D. Consider a particle consider करते हैं. Consider a particle which is at point D, same mass dm. एक पार्टिकल लिया जो कि D इतने पॉइंट पर है और जिसका मास है dm. If this particle is rotated about an x-axis, about an axis of rotation which is x-axis we say, so therefore the moment of inertia of this particle about x-axis is what? What is the moment of inertia? Moment of inertia is nothing but it is the product of mass and square of its distance. So therefore, if this particle of mass dm is rotated about an axis of rotation of x-axis, the moment of inertia of this particle about this axis is what? अब ये y axis को parallel है, so therefore moment of inertia of this particle about x axis is y square into dm. मतलब इस particle का moment of inertia about this axis is y square into dm. एक particle का moment of inertia. So therefore पूरे body का moment of inertia क्या होगा? तो ऐसे particle के moment of inertia का sum करना पड़ेगा, मतलब आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. So integrations of y square into dm is nothing but moment of inertia of whole body about x-axis, or moment of inertia of whole body about x-axis is Ix. So therefore हमको मिला Ix is equals to integration of y square into dm.
मतलब आई मीन टू से व्हाट, एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा, y स्क्वायर, इतना डिस्टेंस क्या है y, और इसका मास कितना है dm, सो देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ ईच डिस्टेंस, सो एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा स्टूडेंट्स y स्क्वायर इनटू dm, और पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आपका हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम करना पड़ेगा, मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट इंटीग्रेशंस ऑफ y स्क्वायर इनटू dm, मतलब इंटीग्रेशन करने के बाद the moment of inertia of whole body will about this axis, लेकिन इस एक्सिस के अबाउट में moment of inertia of body is rx, so therefore rx is equals to integrations of y square into dm। अब यही पार्टिकल अगर y एक्सिस के अबाउट में घूमता हो तो क्या मिलेगा, ये डिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस होगा कंसर्न विद द x axis, so therefore the moment of inertia of this particle about y axis is x square into dm। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास dm अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन y एक्सिस इज x स्क्वायर इनटू dm। तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, x स्क्वायर इनटू dm, दैट इज व्हाट इंटीग्रेशंस ऑफ x स्क्वायर इनटू dm, मतलब इंटीग्रेशंस ऑफ means sum of moment of inertia of all particle rotated about the y axis is integrations of y square into dm, मतलब पूरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम करें, इसका मतलब आपको क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर into dm। अब आप सोचोगे तो पूरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आप सम कर रहे हो तो आपको पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला, और पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y axis is iy, so iy is equals to we got integration of x square into dm। इसको देता हूं स्टूडेंट्स नंबर 1, इसको देता हूं नंबर 2। अब यही पार्टिकल जो हमने x एक्सिस के अबाउट में घुमाया, y एक्सिस के अबाउट में घुमाया, अगर वो z एक्सिस के अबाउट में घूमता है सो देयरफॉर ये हो जाएगा उसका डिस्टेंस, सो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल अबाउट z एक्सिस इज व्हाट OD स्क्वायर इनटू dm। अब ये समझ लो OD, और इसको नाम देता हूं सपोज से व्हाट, इसको नाम देता हूं ODE, E नाम देता हूं, सो देयरफॉर वी आर ऑब्जर्विंग इन ट्रायंगल ODE OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू OE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। OE स्क्वायर इज नथिंग बट y and ED is nothing but x, so therefore we are observing OD square is nothing but OE square according to Pythagoras theorem, so ED square, ये ED square आपको मिल गया, so therefore OE square is nothing but y square and ED square is nothing but x square। सो आपको ये मिला, हमने क्या किया कि एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इफ दिस पार्टिकल इज रोटेटेड अबाउट, सो z एक्सिस रोटेटेड अबाउट द z, x एक्सिस के अबाउट में भी घुमाया, y एक्सिस के अबाउट में भी घुमाया, अब हम z एक्सिस के अबाउट में घुमा रहे हैं, सो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस इज OD स्क्वायर इनटू dm। OD स्क्वायर क्या है, OE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, दैट इज व्हाट हमको क्या मिला, फिर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू dm। अब पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस इज इंटीग्रेशंस ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू dm, लेकिन पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस इज iz, so therefore we got iz equals to integrations of x square into dm plus integrations of y square into dm। So integration of x square into dm is nothing but iy, or integrations of y square into dm is nothing but ix, so therefore we got iz equals to ix plus iy। अब इसमें आपको इतना समझना होगा कि x एक्सिस और y एक्सिस ये इस प्लेन के अंदर में है और z एक्सिस इस लैमिना को परपेंडिकुलर है, सो इसका मतलब इन एवरी केसेस, अब मैं समझ लेता हूं, ये है आपकी बॉडी, इफ दिस इज द लैमिना, अब इस लैमिना को परपेंडिकुलर अगर है तो आपको परपेंडिकुलर का आपको निकाल देना चाहिए, तो इसका
इस एक्सिस के अबाउट में, इस एक्सिस के अबाउट में अगर आपको पता है स्टूडेंट्स, तो उसका परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल सकते हो। या आपको परपेंडिकुलर एक्सिस का पता है तो उसके अबाउट का डायमीटर, अबाउट any axis which is lies in its plane, so easily determined by using this principle of perpendicular axis. So again I repeat, what is the principle of perpendicular axis? So what is the statement? The moment of inertia of laminar body, moment of inertia of laminar body or laminar object about an axis perpendicular to its lamina is the sum of moment of inertia of body about two mutually perpendicular axes which is lie in its plane, that is called the principle of perpendicular axis. So इसके लिए हमने क्या किया, एक बॉडी लिया जिसका मास है कैपिटल M, as you know very well. अब ये बॉडी लिया, बॉडी का मास कैपिटल M है, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स है जिसका मास dm है। अब ये पार्टिकल लिया जिसका मास dm एट पॉइंट D। अब इस पार्टिकल को मैं x एक्सिस के अबाउट में घुमाया तो x एक्सिस के अबाउट उस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला y स्क्वायर इनटू dm, और पूरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर इनटू dm, लेकिन पूरे पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम करेंगे तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, और पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस इज ix, सो ix इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर इनटू dm। सिमिलरली उसी पार्टिकल को हम y एक्सिस के अबाउट में घुमाएंगे तो x स्क्वायर इनटू dm, और पूरे पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस का सम करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस मिलेगा। iy is equals to integration of x square into dm। आप उसी पार्टिकल को z एक्सिस के अबाउट में घुमाएंगे तो od square into dm, लेकिन od square ये है, ठीक है, तो od square की जगह x square plus y square मैंने पुट अप किया तो x square plus y square into dm, मतलब इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस इज दिस। और उसी पार्ट ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो z एक्सिस के अबाउट में घूम रहे हैं, उन सभी पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू dm, मतलब पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस, लेकिन पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस इज iz इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू dm। सॉल्व करेंगे आपको मिल गया iz इक्वल्स टू ix प्लस iy। iz मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिनर बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू any point perpendicular to its lamina is algebraic sum of moment of inertia of body about two mutually perpendicular axes ix और iy, x और y के हैं परपेंडिकुलर है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस समझ में आया होगा। सो आई होप आपको समझ में आया, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।